हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे रेनी सीज़न 250 वर्ड्स के साथ। ये ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। रेनी सीज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न। द रेनी सीज़न इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीज़न. The rainy season comes in month of June and ends in September. The water level of the land returns to normal during the rainy season and helps in irrigation of crops in agriculture. Due to the rainy season, man get all kinds of grain, fruits and vegetables. The creature of the forest get drinking water and food, and new trees and plants start growing. Plants, trees, and grass become so green and look so attractive. With the arrival of the rainy season, the dry leaves also fly away. Different type of birds enhance the beauty of the forests with their melodious song. On the banks of the pond, the frogs start making turmoil. Due to the rainy season, most of the particles and pollution in the air are reduced. In the rainy season, the sky appears very bright, clear, and light blue in allure. And sometimes a seven-colored rainbow is also visible. The whole environment looks beautiful and attractive. The rainy season has its advantages as well as some disadvantages, like mosquitoes, insects, etc. are also born in this season, and there is also risk of spreading disease. There is a risk of flooding in case of excessive rainfall. But in spite of all this season in life giving for the entire living world. अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।